Hello everyone, welcome to our channel Pro Knowledge Center. Our today's topic is mortgage and we are going to see the definition of mortgage, types of mortgages, equitable mortgage. There are six types of mortgages, but we are going to discuss more about equitable mortgage today. Right from definition, then essentials of equitable mortgage, procedure to create equitable mortgage, stamp duty, surcharge registration, format of memorandum of deposit, and also the documentation part. Now we start with our this. So far as topic is concerned, mortgage in simple words, mortgage का मतलब क्या है वो अभी देखेंगे. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विथ mortgage. Now mortgage in simple words, a mortgage is a contract. एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू parties, lender and borrower. Lender and borrower. Lender can be a bank or financial institution here, and borrower. Borrower can be borrower as well as guarantor also. So as the case may be, it is a contract. First of all एक बात देख लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है किस टाइप का है वो अभी हम आगे देखते हैं. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट wherein an interest इन पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक फिक्स असेट्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है. ट्रांसफर टू सिक्योर द ड्यूज ऑफ द लेंडर. लेंडर ने लोन दिया है तो वो सिक्योरिटी के तौर पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ है उसमें प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में. सो देयरफॉर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन a lender and a borrower wherein borrower has agreed to create security interest on specific property for the purpose of securing the dues of the lender. इस टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट है. सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस मॉर्गेज. उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई और किया है. इस डेफिनेशन को वी हैव सिंप्लीफाइड इट टू understand that it is the transfer of an interest in specific immovable property with an object. एक पर्पज है इसका. क्या पर्पज है? पर्पज है टू सिक्योर द लोन डिसबर्स, जो लोन दिया गया है या जो देने देना है टू बी डिसबर्स्ड, और एन एग्जिस्टिंग और एन एग्जिस्टिंग और future date. Here, date means owing money, the state of owing money to someone, to lender, or the performance of engagement, a contract, a, which may lead to a pecuniary liability. Financial obligation create करने वाला कोई contract है. So this condition में क्या है? These conditions में हम कहते हैं कि mortgage is the transfer of interest in specific immovable property with an object to secure the loan disbursed or to be disbursed. इस तरह से ये डेफिनेशन मॉर्गेज का, इक्विटेबल मॉर्गेज का है. सॉरी, वी आर नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट मॉर्गेज एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज इक्विटेबल मॉर्गेज. तो मॉर्गेज में हमने ये देखा है इंग्रेडिएंट्स. अगर मॉर्गेज की हम बात करते हैं, जो जो कंपोनेंट्स हैं इसके मॉर्गेज के लिए जो ज़रूरी है वो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी. द ट्रांसफर मस्ट बी टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ लोन or to secure the performance of a contract which may create financial obligation. The rights and obligations can differ depending on different. So ये अगर हम ingredients की बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी का है. दिस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये एक फैक्टर है. ये एक फैक्टर है. दिस इज अनदर फैक्टर. थर्ड फैक्टर इज टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ लोन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह से भी हम आगे बढ़ते हैं. कुछ कंसेप्ट है इसमें यूज में आती है मॉर्गेज में. लीगल टर्म्स. द ट्रांसफरर इज कॉल्ड अ मॉर्गेजर, द ट्रांसफरी इज कॉल्ड अ मॉर्गेजी, द प्रिंसिपल लोन एंड इंटरेस्ट आर कॉल्ड अ मॉर्गेज मनी, द डॉक्यूमेंट बाय विच द ट्रांसफर डीड इज इफेक्टेड इज कॉल्ड मॉर्गेज डीड. द डॉक्यूमेंट बाय विच द ट्रांसफर इज इफेक्टेड इज कॉल्ड अ मॉर्गेज डीड. एक डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, उसे मॉर्गेज डीड कहते हैं. और इक्विटेबल मॉर्गेज की केस में मॉर्गेज डीड नहीं होगा, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट होगा. वो हम डिफरेंस जो है वो देखेंगे. टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस की बात करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज इक्विटेबल मॉर्गेज, जिसकी आज हम बात करेंगे. देन देर आर अदर
five types of mortgages: simple mortgage, English mortgage, anomalous mortgage, mortgage by conditional sale, usufructuary mortgage. There are six types of, and this is very common sort of common type of mortgage, equitable mortgage, जिसकी हम बात करके करेंगे. एंड नेक्स्ट सेशन में हम सिंपल और इंग्लिश मॉर्गेज का डिफरेंस देख लेंगे. बोथ आर रजिस्टर्ड मॉर्गेज, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. नाउ we see the we move to next, that is equitable mortgage, जो कि आज हमारा टॉपिक ही है. टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इक्विटेबल मॉर्गेज. व्हाट इज इक्विटेबल मॉर्गेज? यहाँ पे जो दिया है, मॉर्गेज इज ऑल्सो नोन एज मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स. इसी से पता चल जाता है कि ये टाइटल डीड्स रिलेटेड मॉर्गेज है, जो डिपॉजिट होना है. मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स. टाइटल डीड्स मीन्स प्रॉपर्टी के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स. Section 58 of Transfer of Property Act provides for the creation of mortgage by deposit of title deeds. What is an equitable mortgage? Now we have seen mortgage, now we are seeing equitable mortgage. The mortgage is called an equitable mortgage when a person delivers documents of title to immovable property to a creditor, lender, or his agent with an intention to create a security thereupon. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मॉर्गेज इज कॉल्ड इक्विटेबल मॉर्गेज वेयर अ पर्सन डिलीवर्स और डिपॉजिट्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल. डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल मीन्स टाइटल डीड्स, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, वो लेंडर के पास डिपॉजिट करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज. इंटेंशन क्या है? टू क्रिएट अ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी क्यों क्रिएट करना है? बिकॉज समथिंग, सम अमाउंट इज गिवन टू द बोरोवर. क्रेडिटर ने बोरोवर को कुछ लोन दिया है, सो एज अ सिक्योरिटी दिस नीड्स टू बी, सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैज टू बी क्रिएटेड. Execution of mortgage, equitable mortgage at notified places only. It needs to be executed in places notified by the concerned state government in official gazette. The three essentials of an equitable mortgage. Equitable mortgage के essentials की अगर हम बात करें तो डेट, एक तो सबसे पहले तो डेट होना चाहिए. देयर शुड बी डेट. डेट मीन्स द स्टेट ऑफ ओइंग मनी. जो स्टेट है, जो कंडीशन है, वो हिसाब से पैसे देना है. देन डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, टाइटल डीड्स डिपॉजिट करना है इसमें. एंड देन थर्ड इंटेंशन है कि ये सिक्योरिटी के तौर पे देना है. द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स डीड शैल बी डिपॉजिटेड विथ एन इंटेंट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी फॉर द डेट. सिक्योरिटी के तौर पर ये डेट देना है. सिक्योरिटी के तौर पर, डेट के लिए ये सिक्योरिटी के तौर पर देना है. सो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज. डेट, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड इंटेंशन. Here intention indicates willingness, the aim or objective to create security over the immovable property to cover the, to secure the debt. जो लोन दिया है, डिसबर्स किया है, या जो लोन डिसबर्स होने वाला है, इस बारे में ये थ्री एसेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज. फीचर्स की अगर हम बात करें तो डिपॉजिट होता है डॉक्यूमेंट्स इसमें. दिस इज वन ऑफ द फीचर that in this type of document mortgage, it is very important that the original documents of property are delivered. Original documents word is there. Then common है, ये बहुत कॉमन में समझा जाता है. कॉमन फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. डॉक्यूमेंट दे दिया है, लोन ले लिया है, रिकॉर्डिंग होता है, बट इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है. थोड़ा प्रोसीजर कम है इसमें. Procedural part is compared to registered mortgage. Minimizes procedural requirement. It does not require registration with the sub-registrar like registered mortgage, sale deed conveyance. And less expensive. थोड़ा expenses इसमें कम होगा. Registration cost और दूसरी cost जो है वो कम होती है इसमें. प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज अभी हमने देख लिया. एसेंशियल्स, इक्विटेबल मॉर्गेज का मीनिंग देखा. एसेंशियल्स देख लिए, फीचर्स देख लिए. नाउ प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज देखते हैं. इक्विटेबल मॉर्गेज किस तरह से क्रिएट किया जाता है. इसमें फ्रॉम लेंडर्स पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे फ्रॉम लेंडर्स पर्सपेक्टिव एज अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हाट दे आर गोइंग टू डू if they are accepting the company owned, leased
एसेट्स जो भी है कंपनी के नाम पे लीज्ड एसेट्स है या कंपनी ने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ली है, तो इन दैट केस व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज द फर्स्ट थिंग इज दैट टेक द सर्च विद द सब रजिस्टर्स ऑफिस टू अंडरस्टैंड द एनकम्बरेंसेस, कोई एनकम्बरेंसेस इसके ऊपर पहले से है या नहीं है। ऑब्टेन अ सर्च रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ मार्केटेबिलिटी, टाइटल रिपोर्ट फ्रॉम द एडवोकेट दैट द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड फैक्टर इज सर्च विद आरओसी में जो चार्जेस रजिस्टर होते हैं वो चार्जेस की पोजीशन पता चल जाती है, कंपनी की प्रॉपर्टी है इसीलिए। और थर्ड जो है थर्ड इसी स्टेज पे हम सॉरी सरसाई का भी एक प्रोविजन आ गया है, वो भी हम देख लेंगे, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा। ऑब्टेन एनओसी इफ इट इज लीज होल्ड प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी लीज होल्ड है कंपनी के नाम से है लेकिन लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, तो ये ज़रूरी है कि लेसर्स का इसमें कंसेंट जो लीज डीड में है वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड देन इट शुड बी ऑब्टेन बिफोर मॉर्गेज क्रिएशन, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा और एक फैक्टर इसमें ऐसा है, इफ़ इट इज़ लीज प्रॉपर्टी में एक फैक्टर और है, इफ़ इट इज़ अ लीज प्रॉपर्टी देन वेदर ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट का स्टिपुलेशन है तो वो भी करना पड़ता है। दिस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट इज बिटवीन बैंक और लेंडर जो भी है, देन द कंपनी विच इज क्रिएटिंग मॉर्गेज एंड द इंडस्ट्रियल estate और लेसर, दिस थ्री will execute that tripartite agreement। वेरीफाई द अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन, इसमें नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा कि द पर्सन क्रिएटिंग मॉर्गेज, जो पर्सन मॉर्गेज क्रिएट कर रहा है वेदर उसके पास अथॉरिटी है, the authorized person should accept deposit of the original documents of the property with the authorized person only deposits. He only can deposit the property documents because company has to authorize. So lender has to verify whether this person has authority or not. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, दोनों दोनों फैक्टर जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये वेरीफाई करेगा वेदर वेरीफाई द अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, बाद में ही कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल फ्रॉम सच पर्सन। After having done this, then after having satisfied with the requirements, whatever prior requirements, then memorandum of deposit can be recorded. Who will record the memorandum of deposit? It will be recorded by the lender. The memorandum of deposit after having received the original title deeds is to be recorded by the lender, and it should be kept in safe custody because it is important to keep the documents in safe custody, and when the loan is repaid then it should be delivered back for assets owned by individual और पार्टनरशिप। नाउ हमने देखा कंपनी ओन्ड एसेट्स देखा, अभी हम देखते हैं इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म का मॉर्गेज हो रहा है तो क्या होगा, if property is owned by an individual or partnership firm, then in that case first thing is this is common for company assets as well as individual assets owned by individual or partnership firm कि सर्च रिपोर्ट लेना है सब रजिस्ट्रार से, टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है, ऑब्टेन द टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग क्लियर टाइटल विद द प्रॉपर्टी, देन इफ इट इज अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी इसमें भी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप में तो एनओसी ऑफ द लेसर और लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी रिक्वायर्ड। Title deed should be deposited by the authorized person. Again, if it is a partnership firm, then all partners they have to deposit the documents, or they can authorize the person. They can issue power of attorney in favor of one person who can create mortgage. If it is individual property, individual person, the owner has to deposit the documents, or if he is authorizing somebody, then the power of attorney holder should deposit that. This is about title deeds should be deposited by the authorized person. Then memorandum of deposit will be recorded, and safe custody of documents is the another thing. Subsequent equitable mortgage. This is very important. Now there are two scenarios here. One is extension, enhancement is there by the lender who is already holding the documents, who is holding the first charge, and he is giving enhancement, or the other lender has come into picture.
इफ अ लेंडर इज ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द टाइटल डीड्स, अगर उसके पास ऑलरेडी टाइटल डीड्स है, देन वो प्रॉपर्टी के बारे में, then he can continue to hold the same for the purpose of creating equitable mortgage by way of constructive delivery of documents to secure enhanced. If the same lender is giving, then to secure the enhanced, or other lender is giving, then another facility granted by same by different lender. Yes, if it is enhanced, then by the same lender. If it is another, then by different lender. The title deeds are held by the lender in the capacity as an agent of the other lender in that case. So in that case, constructive delivery के तौर पर डॉक्यूमेंट्स कंटिन्यू, ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड द डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकता है लेंडर टू क्रिएट द फर्दर चार्ज। रिटर्न ऑफ टाइटल डीड्स ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन अगर रिपे हो गया तो टाइटल डीड जो है वो वापस करना होता है, चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा, चार्ज निकल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वापस दे दिए जाएंगे। स्टैम्प ड्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्टैम्प ड्यूटी का प्रेजेंटली जब महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो बिकॉज इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, तो हर स्टेट में इसका अलग अलग रहेगा। जैसे कि स्टेट के बारे में हमने कुछ कमेंट्स किया है इसके अगले पेज पे, वो हम देखेंगे। प्रेजेंटली स्टैम्प ड्यूटी पेएबल ऑन डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स जो है वो है इफ द अमाउंट सिक्योर्ड बाय द डीड इज लेस देन 5 lakhs, rate of stamp duty is 0.1% of the secured amount subject to minimum of rupees 100, and if it is above, if it is more than 5 lakh, rate of stamp duty is 0.3% of the secured amount subject to maximum of rupees 20 lakhs, and if it is consortium of banks, the stamp duty chargeable shall not exceed rupees 50 lakhs. This is the latest this thing. Regarding further thing about that, the memorandum of entry attracts stamp duty in some states, whereas it is charged on ad valorem basis in some states. However, the upper cap limit is prescribed. Now, another important thing here about stamp duty is that stamp duty on different mortgages, agreements, documents keeps changing from time to time depending on the government policies, and in different states, state-wise also it keeps on changing. It is necessary to go through the government notification amended provisions of the Stamp Act as and when the payment of stamp duty is to be made before execution of mortgage. This is very important because we know that this is the stamp duty today, but tomorrow it can change. So, means, yeah, it is important to know the amended provisions as and when the mortgage is going to be created. जब भी mortgage create करते हैं तो हमको stamp duty check करना होता है। शेरशाह रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट विद सरसाई। व्हाट इज सरसाई? सरसाई स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। सरसाई is a central registry for recording online security interest. सरसाई is the central registry for recording online security interest. जैसे अभी हमने देखा है, the lenders enter details of security interest in movable and immovable properties immediately on creation of security interest. जैसे security interest create किया, वैसे ही lenders को ये जरूरी है कि वो सरसाई में डिटेल्स अपलोड करें, एंटर करें। The lenders are required to give details of property, ओनर्स, लोन्स एटसेट्रा, सभी प्रकार का जो भी आवश्यक जानकारी है, वो सभी प्रकार की जानकारी जो है वो उसमें एंटर करनी है सरसाई के रिकॉर्ड में। सरसाई जैसे कि आपने अभी अभी हमने देखा कि ये एक रजिस्ट्री है, सेंट्रल रजिस्ट्री है, जिसमें जो मॉर्गेजेस किए हुए हैं, जितने भी मॉर्गेजेस है उसकी एंट्री वहाँ पे हुई है, तो हमको पता चलेगा कि उसका क्या मकसद है। अभी देखिए सरसाई रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है। सो इसके फीचर्स में अभी हम देखेंगे, इट प्रोवाइड्स सर्च फंक्शन,
ये सर्च फंक्शन प्रोवाइड करता है। दिस सर्च रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टीज अगेंस्ट विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैव बीन क्रिएटेड। वहाँ पे डिटेल्स दिए हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट जितने भी प्रॉपर्टीज के ऊपर है। एक सपोज ए बोरोवर जो है वो बी बैंक के पास या लेंडर कोई भी है, एनबीएफसी है कोई भी है, उसके पास अगर प्रपोजल लेके लोन के प्रपोजल के साथ एक प्रॉपर्टी के साथ जाता है, तो बी लेंडर कैन वेरीफाई फ्रॉम दिस सरसाई दैट, ये सेंट्रल रजिस्ट्री से वो वेरीफाई कर सकता है वेदर ए हैज मॉर्गेज दिस प्रॉपर्टी टू समबडी एल्स। ये जो प्रॉपर्टी अभी ऑफर करेगा लोन के अगेंस्ट में, तो वेदर ये प्रॉपर्टी जो है ये नई प्रॉपर्टी है या इस पहले कहीं मॉर्गेज करी है, बिकॉज देर इज अ रिकॉर्ड अवेलेबल विद द सरसाई। रजिस्ट्रेशन एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी। अभी इसमें रजिस्ट्रेशन एनहांसेस, अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसमें सरसाई में, तो ये ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज फ्रॉड जो होते हैं वो कम हो जाते हैं इससे, और डिसीजन लेना आसान हो जाता है। इट रिड्यूसेस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, लेंडर्स जो भी है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। The registry acts as repository of information relating to security interest। 2011 से सरसई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और इस वजह से जो डुप्लीकेट या कलर जेरोक्स पे जो मॉर्गेजेस होते थे वो काफ़ी बंद हो गए, और यहाँ पे इक्विटेबल मॉर्गेज के भी जो है रजिस्ट्रेशन होता है। तो द रजिस्ट्री प्रोवाइड सर्च फंक्शन, वो सर्च फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन इट ऑल्सो इनहांसेस ट्रांसपेरेंसी। रजिस्ट्रेशन होने से क्या होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। पहले एक बैंक देता था लोन और इक्विटेबल मॉर्गेज उसके पास करता था, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास रहते थे, बट द अदर लेंडर वाज नॉट अवेयर वो प्रॉपर्टी के बारे में या टाइटल डीड्स के बारे में। बट नाउ सरसई की वजह से वो पॉसिबल हो गया है। Now we see the format of memorandum of deposit of title deeds. Memorandum of deposit of टाइटल डीड्स और कंपनीज एक्सेस। कंपनी ने अगर प्रॉपर्टी ऑफर करी है तो उसका मेमोरेंडम किस टाइप का रहेगा वो अभी हम देखेंगे। ऑन द डे, फर्स्ट पार्ट जो है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ऑन द डे सो एंड सो अ डायरेक्टर A, B, C, director of Messrs X, Y Limited or private limited company incorporated under the Companies Act. Suppose the company is incorporated under 213 and have 2013 and having its registered office at Mumbai, hereinafter referred to as the company, appeared at the lender's place, hereinafter called the name of the lender, and handed over to and deposited with Sri acting for the lender. The title deeds on property documents, more particularly described in the first schedule, here underwritten. So first schedule deals with documents of title deeds, first schedule. In respect of company's immovable properties situated at, and this is the description of the property, and it is specified in the second schedule. So first schedule deals with title deeds and second schedule deals with description of property. Description of property. And the first part of this memorandum of deposit, it says that XYZ ABC director visited which place, lender's place, and deposited the documents, property documents, more particularly described in the first schedule in respect of company's property, which has been described in the second schedule. Then the director who has deposited this, he stated that he deposited the said title deeds on behalf of the company and his capacity as a director of the company with an intention to create a security by way of equitable mortgage on the said immovable properties to secure the repayment and discharge by the company of its liability towards. This is about security aspect.
Loan and security. Loan, details of liability part. And then he says that the director confirmed that he was authorized to create equitable mortgage pursuant to the resolution passed by the company at its meeting held on. He further states that the said resolution was in full force and effect. So he carries board resolution with him. This is the part of board resolution authorization. Sri, the director, further confirmed that. Now he is confirming again. What is he confirming? He is confirming that the company had a clear and marketable title. This is very important actually. Clear and marketable title, and that the said title deeds were the only documents, and whatever documents he is submitting with the lender are the only documents according to him. The only documents related to the immobile properties, and he has made this deposit of title deeds with XYZ. So this is about and the first schedule deals with title deeds, and the second schedule deals with so far immobile property, description of property. Documents for reference purpose we are just discussing here. There is nothing like that, but the main points we are discussing here. Original documents are very important for creation of equitable mortgage. ओरिजिनल टाइटल डीड्स बहुत ज़रूरी है to avoid fraud and all sort of malpractices. It is required that original documents are deposited. Then since company's property is there, then बोर्ड resolution लगेगा कंपनी के प्रॉपर्टी के लिए, और पार्टनरशिप है तो और लेटर ऑफ अथॉरिटी लगेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी लगेगा फॉर द पर्पज ऑफ creation of mortgage. And company's property board resolution is required. एनओसी लीज प्रॉपर्टी है तो एनओसी भी ज़रूरत है, एनओसी की ज़रूरत है. कहीं पे प्रोविजन है ट्राइपार्टाइट का तो वो भी होता है विद द लेसर एंड बोरोवर. देन ये तीन में होता है, लेंडर, लेसर एंड बोरोवर. अभी फ्लैट है, सोसाइटी फॉर्म हो गई है तो एनओसी फ्रॉम द सोसाइटी अलॉन्ग विथ शेयर सर्टिफिकेट. तो ये अगर शेयर सर्टिफिकेट रेडी है, if share certificate is ready, then it becomes part of title deeds. Then it becomes agreements के साथ साथ share certificate also will be there. So it is share certificate, and if builder is there and no society is there, then NOC from builder will be required. If guarantor's mortgage is there, guarantor is creating mortgage, then deed of guarantee is required to be taken along with mortgage. Title clearance report, ROC search report, and Sarsai report. These three reports are very important while deciding to take the property by way of equitable mortgage. Then, once it is recorded, then again it has to be noted with the Sarsai, because that was the earlier report. Now this is going to be the new entry after having taken the mortgage. This is about so far as documents are concerned. Thank you so much for watching this.